So let's begin with functions today. So I want to finish functions today itself. So let's see. Okay. So first, let us look at some inbuilt functions. Okay. So we have already used these functions. Like for example, let's say I have a variable a, right? And let it have values something like this. Okay. So these are the values inside a. Okay. So this is a list. Okay. So how do I know this is a list? Because of the square brackets. Okay. So once I have this, let me print a. So if I do this and if I run this, you can see I get the list printed out. Okay. So that is absolutely fine. But now what I want is I want to get the sum of this. Okay. So if I want to get the sum of this, what is the function to get the sum of all the numbers? Yes, very good. It is sum of a. Okay, so sum of a. Right. So if I do this and if I run it, you can see I get 15. Okay. Now this sum is the function defined inside Python. Okay. So this is a function. Similarly, you must have seen this max. If I run this, I get the maximum number, that is 6, right? Again, this max is a function defined in Python, right? Similarly, I can have min, right? So you can see 4, that is the minimum value, right? So these are some of the functions that are already defined inside Python and we can directly use it, okay? But the beauty is we can define our own functions also, okay? Now, before I go ahead and uh, define our own functions, I would like to show you one more thing, okay? So the best part about Python is it can be extended. Okay, so what do you mean by extended? So Python has lots of functions built in, right? But sometimes you may think that okay, I want more functions in Python, right? So how to get more functions? So for that, you can do something called as import. Okay, so you can import other functionality from other packages and get inside your code. Okay, so by default, those are disabled. Okay, so if you want to, let's say, for example, I want to find sign of a number. Okay, sign, cos, सब पता है ना आपको? तो मुझे sign निकालना है किसी नंबर का, right? So how to do that, right? So sign function तो है नहीं Python में, राइट? सी में भी नहीं होता है, राइट? तो सी में क्या करते हैं साइन फंक्शन के लिए? व्हाट डू वी डू टू गेट साइन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग? फर्स्ट ईयर में किया था, देखो. Yes, we use maths library. Okay, math library, right? So here also it is the same. Okay, so there is a math library in, or math package I should say. There is a math package in Python that we can import. Okay, so the way we import, so there are lots, millions of packages out there. You can think of anything that you want and somebody must have created a package for that. Okay, so that is the best part. Okay, uh, in a later stage I will also show you how to get additional packages from the internet into your project. Okay, so that is a different part. But right now what we're going to see is there are lots of packages already installed along with Python, but they are not loaded. Okay, so you cannot use it directly unless you do something. Okay, so that part is the import statement. Okay, so if you want to import any package, okay, whether it is already there in your system or if you're trying to download it from the internet, you have to use something called as import. Okay, so you have to use the command import. Okay, so import and then whichever package you want to import. So I want to import math package. Okay, so I want to import math package. Okay, so now what I can do is now I can use this for my calculations. Okay, so let's see how to use it. Okay, so to use it, first let's say print
Okay, because I want to see the output, that's why I'm printing. Then what I'm going to do is I'm going to do math, okay, and then put dot. Okay, so all these functions are methods of this particular library. Okay, so if I put dot, you can see what all things it has. Okay, so that is thanks to PyCharm. It gives you all the things. So you can see there is cos, there is atan, then ceil, floor, log. Okay, so these functions are missing in Python. Okay, so but if you import math library, then you can easily do this. Okay, square root नहीं होता है, right? Python में directly square होता है, सॉरी मतलब raise to होता है, but square root नहीं होता है. So if you want to do square root, then again you have the math library, right? So you can see how many functions are there, right? So there, in fact, there is GCD and LCM also, I suppose. I think there was LCM also. Yeah, so LCM is also there. Okay, so these are some of the functions. Let me show you one of them. Let's say I want to find the value of pi. Okay, so I can do math.pi. Okay, now this is a variable. So whenever you access a variable, you don't put this. Okay, brackets you do not put, but when you call a function, then you put brackets. Okay, so now I have math.py. Let's run this and see what is the value of this. See, you get this pi value. So whenever there is something, let's say if I give you a program to find uh, radius of a, oh sorry, area of a circle or perimeter of a circle, then you will be requiring pi value, right? So you can see it is easily, you can get it from here. Okay, so that is the best part of this. Okay, similarly you can do sine, math.sine. Now sine is a function, right? So since sine is a function, it will need these brackets. Okay, now inside these brackets you are expected to give uh, angle. Okay, so the angle should be in radians and not in degrees. Okay, so now you can simply do pi by 180 and find out what are the radians, or you can just go to Google and say, let's say 90 degrees to radians. Okay, so if I do this, you can see I get this value, simple. Okay, and let's put that over here. Okay, so if I run this, I should get the sine of this particular, basically this is 90 degrees. Okay, so if I run this, you can see I get close to 1. Okay, because I will not get exactly 1, but you can see I get 0.999999. Okay, so that means it is almost 1. Okay, so this is how you can use additional libraries into your code. Okay, यहाँ तक समझा तो मैं आगे बढ़ता हूँ, which is the most important part. यहाँ तक क्लियर है? Any doubts? Okay, so let's begin. So I hope this much is clear. So I can import. So we will be importing many more packages later on when we go to fourth and fifth chapters. We will be having because everything is based on the import statement. Okay, because जो numpy library है और जितने भी machine learning के libraries है, सब कुछ हम लोग को externally import करना पड़ेगा, right? So there the import statement is very important. Okay, I will give you a little more detail in the last part of this particular chapter, what is import and a bit more detail about import. But right now let's concentrate more on functions. Okay, so let us see. So we have seen how to use functions. Okay, now let us see how to define our own functions. Okay, so अभी तक किसी और ने बनाया हुआ फंक्शन हम लोग यूज कर रहे थे, अभी हम लोग खुद का फंक्शन बनाएंगे. ठीक है, so let us see. So now in Python, making a function is very easy. Okay, so the first thing that you do is write the keyword. The keyword is def. Okay,
Okay, so define, I could say. Okay, so def, and then a space, and then the name of the function. Okay, so the name of the function is very important. So let's say I want to name it print me. Okay, so this is the function, and then you have to put brackets, okay, round brackets, and then finish it off with a colon. Okay, so as I told you before also, whether it was for loop or a if or a while, okay, whenever there is a colon means you are starting a new block. Okay, so you are starting a new block, so press enter. So you can see as soon as you press enter, now you no longer come over here, you come over here. Okay, so whenever it is indented, you should understand that it is a new block. Okay, so now whatever you type inside this print command will be inside the function. Okay, uh, so let's print hello. Okay, so very simple. I have written uh, a function with print. Print me is the name of the function, and inside that there is only one line of code, that is print hello. Okay, so now can I run this code? Should I run this? Oh, if I run this right now, what will I get? What will be the output? So basically in any programming language, whether it is Python, C, C++, Java, or any other language, whenever you define a function, the function will not run unless you call it. Okay, so if I run this right now, you can see there is no output. Okay, so there is nothing, right? So this function will not run unless you call it. Okay, so how to call it? So for calling it, that is why we have given a name to the function. That is the importance of the name. Okay, so this name we have given so that we can call it later. Okay, so now we just have to do print me. Okay, so you can see in the drop down itself it has came. So now I can do print me. Okay, so now if I run this, you can see hello, right? So that is printing. Okay, so now before we go ahead, we should understand why and when we should make functions. Okay, so हर छोटी मोटी बात पे function बनाने का नहीं. Okay, so there is a specific reason. Okay, so that reason is very simple. Whenever you feel that certain part of the code will be reused again somewhere else. Okay, let's say I want to add two numbers. Okay, so for example, let me just go down. Okay, so I have a equal to 6. Okay, and I have b equal to 8. Okay, and I want to print a plus b. Okay, now this is the code. अभी इतना सही करना है तो कोई बड़ी बात नहीं, right? So ये ठीक है. But what if I tell you I want to do this multiple times with different numbers? Okay, so this is what I want. This is my program. Does this program look good? No. Why? Because you can clearly see there is repetition of code. The same print command, you are doing it 3 times with the same addition. Okay, so this is called bad programming. Okay, so whenever there is any part of code which is repeating in your program, then that shows that there is a need of a function. Okay, so you can easily create a function for that, right? So here you can see I needed a function for adding, right? So I could have created a function called add, and then I could have called it, right? So that would be a much better option. Okay, so this is just an example. This is not a real example, but just to explain you what is the use of functions. Okay, so now I have this, right?
So now another importance of a function is it is not that function can be used only once. Okay. So now if I call this again, I will, now you are calling the same function twice. Okay. So if I run this, you can see I get hello, hello twice, right? So now you can see I can use this to run the program any number of times. Okay, so I can call it any number of times and it will run those many number of times. Okay, so this is also very important that once you define a function, you can call it any number of times. Okay, now, so now let us say this is the function, but this function doesn't do anything, right? So any number of times I'm going to call this, it is going to print the same thing. Okay, so this doesn't uh, is not at all useful, right? So now what you can do with functions is is like a black box where you put some data and you get some data out. Okay, so basically you can think of it like a function, a block. So you can think of it like a box. Okay, so this is like a function. So you can put in some data and as an output, you can get some other data. Okay, or you can say modified. So you give raw data in and you get modified data out. Okay, so that is what you can do with functions. Okay, so first, right now, what you're going to do is we are going to see how to give data to the function. And in the next session, we will see how to get back a modified data. Okay, so let's look at that. So first of all, I want to give data to the functions. Okay, so when I give data to the functions, I have to first accept that data. Okay, now to accept it, you need a variable, right? So whenever you want to store something, you need to have a variable. Okay, so first thing you do is you inside this brackets, so this is the name of the function, and inside the brackets, these brackets are there for parameters. Okay, so basically whatever you want to give to the function, you give it over here. Okay, so here you can give any name. Okay, so the variable name that I'm selecting is itself name. Okay, so let's suppose this is the name, right? And I want to print that name along with this. Okay, so if I say Shibu, then it should print hello Shibu. Okay, so you can do it in any way. So I have shown you 4 methods. So let's use the first method. If you remember, so print hello comma name. Okay, so this what it will do is it will add a space in between and print join them together. Okay, so that is what this command does. Okay, now once I have this, now this function will not work. Okay, so this function will not work. If I run this, you can see I get an error. Okay, so what this error is saying, missing one required positional argument name. Okay, so that means what, once you give this structure, then the input should also be in that structure. Okay, so that means it is expecting something over here. Okay, so now you cannot give only print directly. Okay, so print me directly नहीं कर सकते, अभी इसके अंदर आपको ये name भी देना पड़ेगा, right? So how to give? So you just give whatever you want to give over here. Okay, so this is the first argument. Okay, so this parameter I'm passing over here. Okay, so let's run this and see. You can see I get hello Shivu. Perfect. Okay, so now the best part is I can take this, paste it, and I can say Raj, right? So the same function is going to print different things for different commands. Okay, so let me run this. You can see I get hello Shibu and hello Raj. Okay, so that is the best part about functions. Now functions can be reused any number of times just by changing these parameters. Okay, so
So that is how you can give input to your function. Okay, so all you have to do is give a name over here. Okay, whatever name you want. I could have given here X also. Okay, it doesn't matter, whatever you give, it is fine. Okay, so but whenever you name something, see to it that it is logical. Okay, so मतलब ऐसे ही कुछ भी नाम मत दे दो, राइट? सो इधर आपने y दे दिया, x दे दिया, तो समझ में कैसे आएगा कि फंक्शन के अंदर वो कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, राइट? सो इट्स बेटर टू गिव सम लॉजिकल नेम्स. ओके, अब ये हो गया मेरा single argument. So what if I want to pass multiple arguments to the function? Okay, that is also very easy. Just after the name, you just put a comma and add another argument. Let's say age. Okay, so ऐसे आप जितने चाहिए उतने arguments pass कर सकते हैं. Okay, so let's say I want to pass gender also. Okay, so I have name, I have age, I have gender. Okay, simple. Now I want to use this inside my print statement. Okay, so right now you can see name is in white color, whereas age and gender is in gray color. Okay, so that simply tells, this is the beauty of PyCharm, that it is telling you that you have used age, but sorry, you have defined age, but you have never used it. Okay, so so that means those variables are unnecessary. Okay, but right now I have not implemented it, that's why it is showing it like that. So let's say my name is name. Okay, and age is age, and I am a gender. ओके, अभी आप बोलोगे क्या किया है मैंने, राइट? तो ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज किया है, बट अभी तक मैंने किया नहीं है पूरा. ओके, सो दिस इज हाउ आई नॉर्मली राइट माय स्ट्रिंग. ओके, सो व्हेन आई राइट इट, आई जस्ट first form the string. Okay, so this is the string that I want, right? Now what I'm going to do is I'm going to replace wherever the variables are there, I'm going to replace it with I will add curly braces in front and behind. Okay, so this is the name that I want to replace it with this name, so I'm just putting curly braces over here. And age is age. Now here also I want curly braces, and I am a either be curly braces. Okay, now right now if I print this, it will not work. Okay, so it will simply print curly braces name curly braces. Okay, so that is what it is going to print. Okay, now to actually format this, you have to do F in front of it. Okay, so you can see as soon as I put F, the color of this changes. Okay, so that is very important. So this form for formatted string, this F is very important. Okay, so once that is done, now let us run it. Okay, now if I run it, obviously I will get an error because missing arguments are missing. Okay, sorry, arguments are missing. Which arguments? Age and gender is missing. Okay, so I have only given name. Okay, let's give age. Let's say age is 33 and gender is, let's say, male. Okay, and let's say 45 and gender is, let's say, male. Okay, so I have now two print commands. So I've given these input parameters. Okay, so now let's run it. So you can see I get my result perfectly. Okay, so my name is Shibu, and age is 33 and I am a male. Now second line says my name is Raj, age 45, I am a male. Okay, so you can see I have created a function with multiple parameters. So these are called as parameters. So I have defined three parameters. And now let us see various types of functions. Okay, so in the comment I have mentioned four types of
arguments. Okay, so arguments are the ways in which we can pass the data from here to here. Okay, so these are the parameters and these are the arguments. Okay, so this is the first argument, so I'm passing this over here. Okay, so right now what we are seeing is called as positional arguments. Okay, or we can say positional parameters. So we can use them in any order you want. Okay, but the idea is that whatever you pass over here, it goes to this particular variable. Okay, so these are called as positional parameters. Okay, so these are called as positional parameters, right? So whatever you give over here goes to here. So first one goes to the first one, second one goes to the second one, and the third one goes to the third one. Okay, so these are the name of the variables and these are their values that you are passing. Okay, now what happens if I change this over here and this over here? Okay, what will happen now? If I run this, you will see what happens. Okay, so my name is male and age is 33 and I am Shibu. Okay, so this is what happens in positional argument. Okay, so in positional argument, what happens is whatever you give, so everything is based on position. So whatever you give first goes to the first parameter, second goes to second, and third goes to third. Okay, so everything is based on position. Okay, but sometimes it is it may be possible that you don't want to follow the position. Okay, you want to give it in any random order you want. Okay, मतलब मुझे पहले एज देना है, फिर जेंडर देना है, फिर नेम देना है, मेरी मर्जी, राइट? अगर आपको वैसा करना है, then you have to tell Python that you want to do like that. Okay, so how to do that? You can simply do you can give the keyword along with the values. Okay, so how to do it, I will show you. So let's say gender is equal to, so when you do like this, okay, so when you do like this, it means that you are specifically telling that this is a gender and not a name. Okay, so now this is no longer positional, it is keyword based. Okay, so that is the second one, right? तो ऐसी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एज इक्वल टू 33 एंड इधर मैं करूंगा नेम इक्वल टू शिबू. ओके, तो भी ऐसे करने से क्या होता है, आप कोई भी ऑर्डर में दो, इट डजंट मैटर, राइट? इट विल गो टू देयर रिस्पेक्टिव स्लॉट्स. ओके, सो जेंडर जेंडर में जाएगा, एज एज में जाएगा, नेम नेम में जाएगा. ओके, सो इफ आई रन दिस, you can see I get the result perfectly. Okay, so this is called as keyword argument. Okay, very simple, right? So now यहाँ तक तो ठीक था, right? But what happens if I, let's say, अभी यहाँ पे भी मेल है, यहाँ पे भी मेल है, right? दोनों जगह मेल है. So what if I remove this? Okay, मेरे को दो ही पैरामीटर देना है. मुझे मालूम है कि जेंडर हमेशा मेल ही रहने वाला है. ओके, सो इसको अगर मतलब कभी कभी फीमेल भी हो सकता है, बट फिलहाल दोनों में मेल है, राइट? सो इफ आई रन दिस, इट विल गिव मी एन एरर. व्हाई? बिकॉज 3 एक्सपेक्टेड थे, आपने 2 ही पैरामीटर दिए, राइट? सो दैट इज नॉट correct. Okay, but you have an option to define default values for these variables. Okay, now how to define default values? It's very simple. You just put in the parameter, you can just put equal to and you can say, let's say male. Okay, तो भी इससे क्या होगा, ये default value gender का male हो जाएगा, right? So now if you do not give a gender in the when you call it, it will assume that it is male. Okay, अगर नहीं दिया तो, अगर आपने दिया तो जो आप दोगे वो लेगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला है जेंडर इज मेल, राइट? सो दैट मीन्स व्हाट, हाँ मतलब ये मेल ही है, राइट? बट अगर मैं इसको फीमेल करूंगा तो फीमेल ले लेगा, राइट? बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कुछ दे ही नहीं रहा हूँ. ओके, अगर मैं कुछ नहीं देता हूँ तो वो देखेगा डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट किया है क्या,
तो डिफॉल्ट वैल्यू है तो वो लेगा, राइट. सो इफ आई रन दिस यू कैन सी आई गेट माय नेम इज शिबू सेम एंड द एज फर्स्ट वन इज मेल क्योंकि मैंने मेल दिया था. सेकेंड में क्या है, मैंने दिया नहीं कुछ भी तो भी उसने मेल ले लिया, right. So if I make it female over here, right, and if I run this you can see I get the result, right. Okay, so एक बार ये हो गया, उसके बाद Hello, sir. हाँ बोलो. So, in that sentence, means in that line, if we don't give the keyword age, then it will be printing 33 directly, na? नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने एज नहीं दिया ऐसा बोल रहे हो ना. So, sir, first sentence, वो अपने keyword देना gender is equal to male, age is equal to 33. इधर So, if हाँ सिर्फ 33 लिखते हैं अगर उधर. हाँ, ऐसा Yes, sir. नहीं, ऐसा नहीं चलेगा बिकॉज वॉट एवर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आर देयर इट शुड कम फर्स्ट. Okay, so that is a rule. Okay, and see there is a error. Okay, so आप जो भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है वो आपको पहले देना पड़ेगा, राइट. एंड जो बाकी के आर्ग्यूमेंट्स है वो बाद में देने, मतलब जो आपने ऐसे दिए हैं ना कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स वो आप बाद में दे सकते हो, राइट. बट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट शुड कम फर्स्ट. ओके, सो राइट नाउ हियर आई कैनॉट यूज दिस डायरेक्टली. ओके, बिकॉज अगर मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन क्या रहेगा, अगर मैंने इसको इधर डाल दिया, ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसा डाल दिया तो क्या होगा, 33 किधर जाएगा, इसको मैंने कोई कीवर्ड तो दिया नहीं है, राइट. तो ये मतलब क्या हो गया, ये पोजिशनल हो गया कि कीवर्ड बेस्ड हो गया. अगर मैंने इसके आगे कीवर्ड नहीं दिया है देन दैट मींस Positional हो गया इट ना? इज पोजिशनल. एंड इफ इट इज पोजिशनल दिस 33 विल गो वेयर, इनसाइड नेम, राइट. तो मतलब 33 आपने नेम पे डाला और आगे जाके आप क्या कर रहे हो, फिर से नेम को सेट कर रहे हो शिबू पे, राइट. तो एज किधर गया, राइट. एज तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस विल गिव यू एन error. If I run this you can see, okay, so first of all it is giving me multiple values for argument name. So even if I remove this it should still give me an error. Okay, so you can see missing one positional argument age. Okay, so that means it is very important to give the arguments. Okay, So means we cannot use keyword and positional argument in single line, right? you can but first positional आना चाहिए और बाद में keyword आना चाहिए. जैसे कि for example मैं इसको भी एक एज दे देता हूँ 33. ओके, सो इसको मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया, राइट. सो नाउ आई कैन डू दिस. okay, and after that I can say gender is okay, gender is test. ठीक है, ऐसे ही मैंने दे दिया, right. Now if I run this it should work, right. Why? First of all पहला वाला क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है तो वो किधर गया, नेम में गया. ओके, सेकंड में क्या दिया है मैंने, जेंडर इक्वल टू टेस्ट दिया है. जेंडर इक्वल टू टेस्ट मतलब वो इधर गया, राइट. एंड थर्ड मैंने कुछ दिया ही नहीं, राइट. तो वो क्या ले लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, एज इक्वल टू 33, राइट. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, राइट. सो यू कैन मिस एंड मैच. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको कीवर्ड यूज करना है तो कीवर्ड यूज करना है, पोजिशनल यूज करना है तो पोजिशनल, ऐसा नहीं है. सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि पोजिशनल कभी भी स्टार्टिंग में आएगा और कीवर्ड बाद में आएगा. ओके ओके, so we have seen these three. So what is positional, what is keyword, and what is default argument. Okay, so if you do not give anything and if you have mentioned default over here then it will be it will take the default value. Okay, so यहाँ तक तो सब ठीक है. Now एक last वाला है. There's a beautiful feature of Python, that is variable argument. Okay,
नाउ वेरिएबल आर्ग्यूमेंट के लिए मैं एक एक्चुअली फंक्शन बनाता हूं, देन you will understand it better. Okay, let's create a function for adding two numbers together. Okay, so let's write a function. So कोई मुझे बताएगा फंक्शन कैसे लिख सकते हैं? Yes, first required statement is, yes, a function starts with a definition and the definition keyword is def. Okay, so def, then I need a name for the function. Okay, so I can be very descriptive and say add two numbers together. ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूं, अब वो तो आपके ऊपर है आपको कैसा नाम देना है, बट टू मेक इट सिंपल आई विल सिंपली पुट ऐड. ओके, तो मैंने ऐड लिया, अब दो नंबर को ऐड करना है तो दो वेरिएबल्स भी लगेंगे, सो ए कॉमा बी, राइट. सो ये हो गए, अब मेरा ब्लॉक चालू हो गया और यहां पे आऊंगा मैं, एंड नाउ आई विल से प्रिंट a plus b. Simple. Okay, ekdam simple definition. Now here the first one def is the keyword, the second one is the name of the function, the third one are the parameters, this is the block. Okay, so I'm starting the block and this is the actual code. Okay, so you can have multiple lines of code, मैंने एक ही line डाला है, ठीक है. So this is the actual code. Okay, so now if I run it, nothing actually happens because I have to call the function. Okay, so let's come down. Can I type, can I do this? Will it work? Okay, why no? What is the problem over here? Yes, very good, Narayan. The indentation is the problem. Okay, so the problem is the indentation, and when you put it in the same indentation, then that means it is in the same function. Okay, so अभी तक ये बाहर गया ही नहीं, आपने सेम फंक्शन में सेम फंक्शन को कॉल किया, राइट. सो ये वाला लाइन कब रन होगा? जब आप इसको कॉल करोगे, और ये तो कभी कॉल हो ही नहीं रहा है. इफ आई रन दिस यू कैन सी देयर इज नो आउटपुट, राइट, बिकॉज ये फंक्शन के अंदर ये कभी आता ही नहीं है, राइट. मतलब ये कॉल ही, ये फंक्शन ही कॉल नहीं होता तो ये कहाँ से आएगा, है कि नहीं. सो दैट्स व्हाई this will not work. So I have to do shift tab to bring it out of indentation, right. टैब करने से इंडेंटेशन होता है, शिफ्ट टैब से अनडू होता है, ठीक है. Okay, so now once I have this, now I can run it and see the output. Okay, so you can see I get 9. Simple. Okay, एकदम simple सा function था, दो input दो और आपको उसका output मिल गया, right. So now let me copy this, paste it few times. Okay, and let's change this to some other numbers. Okay, so मैंने change कर दिया. Now I am using the same function to do different things at different times. Okay, so if I run this, you can see I get 9, 9, 44. Cool. Okay, so यहाँ तक सब कुछ ठीक है, ठीक है. Now what we are going to see is what is variable keywords. Oh, sorry, what are variable parameters. Okay, so variable arguments कैसे देने का. So right now you're assuming that you are going to add two numbers only. Okay, so आपने assume कर लिया है कि दो ही numbers का आपको add करना है, right. तो यहाँ पे भी दो दिया, यहाँ पे भी दो दिया, because function definition में ही दो ही है कि नहीं. But what if you don't know how many values you are going to put. Okay, तो हो सकता है आपको तीन values को add करना है, right. So 4, 5, 6. हो सकता है आपको उसके बाद में आपको ऐड करना है 4, 5, 6, 7. ओके, सो इतने नंबर्स को ऐड करना है, राइट. उसके बाद हो सकता है कि आपको दो ही नंबर्स को ऐड करना है.
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, right? So in this scenario where you don't know how many numbers will be provided in the function, this is not going to work. Okay, so यहाँ पे क्या आप बोल रहे हो कि 2 ही आने वाला है, बट यहाँ पे देखो आप कितने प्रोवाइड कर रहे हो, कभी 3, कभी 5, कभी 2, right? So that means the number of arguments that you're passing is not fixed. In that case, what you can do is, there is a very nice little trick that you can use. So whenever whenever the parameters that you're giving is not fixed, okay, so the number of parameters are not fixed, then you can do a very simple trick. You take any variable, let's say x, ठीक है, you take any variable x, एक ही वेरिएबल लेना है आपको x, एंड उसके बाद उसके आगे एक स्टार डाल दो, ठीक है। तो ये करता क्या है, जितने भी आप इनपुट देते हो वो उसको एज अ टपल बना के इसमें डाल देता है, x में डाल देता है। ओके, सो लेट मी शो यू व्हाट x इज, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, सो इफ आई रन दिस, you can see I get now x is in the first function call it is 4 5 6 tuple, second function call जो भी आप input दे रहे हो ना वो as a tuple बन के आ जाता है, right? Now once I have a tuple, then getting the sum is very easy. If you remember, I have a function called sum, बस इतना ही करना था, राइट? सम कर दो तो x के अंदर कितने भी नंबर्स होंगे, 1000 नंबर्स भी रहेगा तो भी वो सम करके दे देगा। ओके, सो लेट मी रन दिस एंड यू कैन सी whatever numbers you give, it will give you the sum. Okay, so this is the beauty of this particular star in front of x. Okay, so जैसे ही आप स्टार दे दोगे उसके बाद मतलब कोई भी पोजीशन पे स्टार आएगा, उसका मतलब है कि उसके आगे जो भी जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे वो सब एक ही टपल में बन जाएगा, ठीक है। सो लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। लेट्स डिफाइन दिस कॉल्ड OPR. Okay, so let's call it operation. Okay, and in this, so let me copy this. Okay, and in this operation, or let's say, let's not call it operation, let's call it marks. Okay, so let's call it marks. Okay, so let's call it marks, and here what I want is, I want to display, let me first show you what I want. So I am going to give the input, let's say Shibu has got 45, 34, 23 marks. Okay, so this is the type of data that I'm going to give to my function marks. Okay, so उसके अंदर देखो इनपुट कैसा है, सबसे पहला मैं क्या दे रहा हूँ, नेम, और उसके बाद में कुछ मार्क्स दे रहा हूँ। All you have to do is find out the percentage, how much percentage I have received. Okay, so basically what I have to do is, I just, once I give you this, you have to type Shibu got 67%. ओके, मतलब मेरा इनपुट ये रहेगा, आउटपुट ये होना चाहिए, राइट? तो फंक्शन का इनपुट ये, आउटपुट ये। ओके, so now how to handle this? It's very simple. So first of all, let's write the calling. Okay, so let's call it marks. Okay, and here I'm going to say Shibu, then 45, then 34, then 23. Okay, तो ये मैंने मार्क्स दे दिए, राइट? सो ऑल दीज वेयर आउट ऑफ, लेट्स से ये सब आउट ऑफ 50 था। ओके, ऐसा अज्यूम करते हैं ये सब आउट ऑफ 50 है, राइट? सो ये हो गया मेरा कॉलिंग। ओके, सो नाउ आई हैव टू एक्सेप्ट दिस ओवर हियर। अभी इसको कैसे लिखूं मैं, राइट? कोई थोड़ा दिमाग लगा के बता सकता है?
क्योंकि ये चीज फिक्स नहीं है, राइट तो नेक्स्ट यूजर का हो सकता है, लेट्स से इसको मैं कॉपी करता हूं, और नेक्स्ट हो सकता है राज को समथिंग लाइक दिस मार्क्स मिले। ओके सो उसके उसके सब्जेक्ट्स में 5 सब्जेक्ट है और शिबू के सब्जेक्ट्स में 3 ही सब्जेक्ट है, राइट सो ऐसा मेरा इनपुट रहने वाला है। नाउ टेल मी what should be the definition over here? Okay, what should I do? The obviously थोड़ा सा challenging है, but I want to see if anybody can think of the solution. Will this definition work? मतलब यही अगर मैंने यूज किया तो चल जाएगा। Okay, so now here very important thing is to analyze the problem. Okay, so analysis में देखो क्या है। पहला चीज, पहले वाले जो पैरामीटर है वो तो फिक्स्ड है, वो नेम ही आने वाला है, राइट सो व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट विथ नेम। ओके सो आई विल स्टार्ट विथ नेम, दैट इज द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, राइट सो ये शिबू यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड केस में राज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो बाकी का पार्ट है वो फिक्स नहीं है। ओके पहला नाम आने वाला था ये फिक्स है, बट बाकी जो है वो फिक्स नहीं है, कभी 3 होता है, कभी 5 होता है, कभी कुछ भी हो सकता है, राइट सो दैट मीन्स दिस इज नॉट फिक्स्ड। सो इन दैट केस व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट स्टार एक्स ओवर हियर। ओके सो ये चीज बहुत ट्रिकी है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे आपको पोजिशनल करना है और कहाँ पे वेरिएबल करना है, राइट सो ये चीज फिक्स था, इसके लिए मैंने यहाँ पे पोजिशनल किया, राइट और ये चीज वेरिएबल था कि कभी 3 हो रहा था, कभी 5 हो रहा था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार एक्स कर दिया। ओके सो नाउ वंस आई हैव दिस, नाउ आई कैन एक्चुअली कैलकुलेट द परसेंटेज। हाउ विल आई कैलकुलेट द परसेंटेज? सो लेट्स से y is equal to first of all I have to do sum, right so sum of x, ठीक है तो मैंने सारे x को ऐड कर दिए। अब क्या करना है, डिवाइड बाय आई वांट टू फाइंड दी टोटल, राइट सो टोटल कैसे फाइंड करूंगा, आई हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन x। ओके सो इस केस में 3 है, इस केस में 5 है, राइट सो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द कमांड इज लेंथ। ओके लेंथ ऑफ x, एंड मैंने क्या बताया था, एक सब्जेक्ट का मार्क्स कितना है 50, so I will put into 50. Okay and to be on the safe side I will put a bracket over here because operator precedence वगैरह वगैरह। ओके तो वो सब झंझट नहीं चाहिए मुझे, इसके लिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया, राइट सो आई गॉट y। अभी भी मेरे को परसेंटेज नहीं मिला है, अभी मुझे क्या मिला है, डिवीजन मिला है, राइट सो नाउ आई विल पुट अनदर ब्रैकेट ओवर हियर and I will multiply the entire thing with 100. If you remember, that is how I get a percentage. Okay, so whatever total you got, divide by, sorry, whatever sum of all the marks, divide by the total into 100. Okay, so this is the formula, and now I will print. Now the printing is very important. So the print is going to be name got y परसेंट। ओके सो ये मैंने फॉर्मेट करके स्ट्रिंग डाल दिया है। अब इसको एक्चुअली डिस्प्ले भी तो करना है, तो उसके लिए मैं कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे और y के आजू बाजू में भी कर्ली ब्रेसेस। ओके नाउ इफ आई रन दिस राइट नाउ it will not work because you can see it gives me simply this। okay so f बहुत important है, so I will just put f over here, and if I run this now you get the percentage। okay Shibu got 68% and Raj got 73.6%। okay so this is how you can do positional as well as variable arguments। okay so these were the 4 types in which you can pass the arguments। okay so first one is positional, keyword based, डिफॉल्ट एंड वेरिएबल। ओके सो ये चारों देख लिए हम लोगों ने, और एक है वेरिएबल कीवर्ड। ओके सो दैट वी विल सी लेटर, राइट नाउ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट।
अभी इतना ही काफी है, ठीक है। लास्ट वाला हम लोग बाद में कभी देखेंगे, ठीक है। सो ये हो गया अपना फंक्शन डेफिनेशन। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा पता है? अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक बॉक्स है विच इज एक्चुअली योर फंक्शन, और उसको डेटा कैसे देते हैं, ओके ये देखा है। अभी तक हम लोगों ने डेटा कैसे निकालना है वो नहीं देखा है अभी तक, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम योर फंक्शन, ओके। सो नाउ यू विल से कि नाउ यू विल से अरे डेटा सर निकल तो रहा है क्या, आउटपुट तो आ रहा है डेटा, राइट? दैट इज नॉट the output, okay? So basically what you are doing is आपने फंक्शन को कुछ इनपुट दिया और फंक्शन ही सारा काम कर रहा है, प्रिंटिंग विंटिंग का सारा काम फंक्शन ही कर रहा है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ओके। सो दिस लाइन ओवर हियर, दिस इज वेरी रॉन्ग, ओके। In future this is going to create a big problem, and I will explain you why, okay? Now let's assume you have built a program, okay? You have created a program. It's a big program and it has multiple files, multiple functions, सब properly चल रहा है, आपका सब कुछ चल रहा है, और आपने इस फॉर्मेट में आपने आपका प्रिंट किया है, ओके। सो ये आपका प्रिंट आ गया, राइट? सो नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली। अब एक नया फीचर ऐड करना है, ठीक है। अब आपके नए फीचर में मुझे आउटपुट थोड़ा अलग फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। मतलब करना यही है बट आउटपुट थोड़ा अलग फॉर्मेट में चाहिए। ओके, सो आपको एक नया फीचर इंप्लीमेंट करना है, उसके अंदर आपको आउटपुट इस फॉर्मेट में चाहिए, शिबू इक्वल टू 73%, ओके। और आई कैन से मार्क्स ऑफ, और लेट्स से percentage of Shibu is 73.6%, ओके। बट फिलहाल आपका आउटपुट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, राइट? तो कैसे कैसे करोगे इसको चेंज? हाउ विल यू चेंज इट? आपका फिलहाल आउटपुट ऐसा आ रहा है, आपको आउटपुट ऐसा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, कॉमन सेंस क्या बोलता है, ये प्रिंट कमांड चेंज कर दो, है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट मैं इसको सिंपली यहाँ पे ले लूँ, यहाँ से ले लूँ, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ so that you can see what is happening, okay? So let me print it, and here I will put name, and here I will put y, okay? Perfect, और इसको f कर देता हूँ, ठीक है। How many of you think this will work? Yes, yes, yes. Okay, so yes, it will work. You can see percentage of Shibu is 60, okay? But this is very wrong, okay? Why it is wrong? Can anybody tell me why it is wrong? Okay, so the reason this is a bad idea is because, now first thing you should note is, as I told you, your system was already working, okay? That means what? At many places you have used this line, okay? So at many places you have already used this line, okay? And you, in one of the place, in the new feature, you wanted this type of a print, okay? So what happens if I comment this out, and if you replace, basically I'm replacing this line with this line, what will happen? नया कोड तो अपडेट हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट द ऑल द ओल्ड कोड, जहां पे आपको एक्चुअली पुराने जैसा ही आउटपुट चाहिए था, वो भी चेंज हो जाएगा,
समझ में आ रहा है लॉजिक? मतलब पहले जहाँ पे ये चीज यूज हो रहा था, ये वाला लाइन यूज हो रहा था, मुझे वैसा ही आउटपुट चाहिए, बट अभी जो नया कोड है उधर मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए। दोनों पॉसिबल है क्या? आई कैन हैव either द आउटपुट इन दिस फॉर्मेट और आई कैन हैव इट इन दिस फॉर्मेट। ओके, अगर मैंने ऐसे फॉर्मेट में रखा तो नया नया जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है उसका रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होता। अगर मैंने इसको ऐसा रखा तो पुराने प्रोग्राम्स सेटिस्फाई नहीं होंगे, राइट? मतलब पुराने जो आपने पहले से चल रहे वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, राइट? सो जस्ट इमेजिन दिस सिनेरियो। ओके, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, दैट इज हाउ टू टेक आउटपुट फ्रॉम अ फंक्शन एंड व्हाई डू यू नीड टू टेक। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, हाउ टू टेक से पहले व्हाई यू नीड टू टेक। ओके, मतलब फंक्शन से रिटर्न आउटपुट क्यों लेना रहता है, राइट? बिकॉज आप जब हार्ड कोड करते हो प्रिंटिंग वाला कमांड फंक्शन के अंदर, देन देयर इज वेरी लिटिल स्कोप ऑफ चेंजिंग द आउटपुट। ओके, सो यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया आउटपुट, या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा, बट हो सकता है अलग अलग जगह में आपको अलग अलग टाइप का आउटपुट चाहिए, राइट? मतलब हो सकता है आधे जगह, मतलब स्टार्टिंग के प्रोग्राम में आपको ऐसा आउटपुट चाहिए, और आगे जाके मतलब नीचे नीचे जाओगे आप प्रोग्राम में तो आपको ऐसा आउटपुट चाहिए। ओके, सो now by doing it like this, having the print command inside the function, you are restricting yourself to use either this or this. That is very wrong. Okay, so basic idea of a function is you give some input, take an output, and then you do anything you want with it. Okay, never do printing inside a function. That is very very important. Okay, so the last part is how to get some data from a function. Okay, so before I show you how to return, one very important thing is whenever you give some input to the function, you do whatever maths or whatever modifications you want to do inside the function, but never print anything inside the function. Okay, सो ये जो दो लाइन है ना, ये लाइन है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ओके, बिकॉज ये लाइन इसके अंदर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फंक्शन का काम प्रिंटिंग है ही नहीं। ओके, फंक्शन शुड बी ओनली रिस्पॉन्सिबल टू डू सम कैलकुलेशंस और डू सम मैनिपुलेशंस वगैरह। ठीक है, इट शुड नेवर डू प्रिंटिंग। ओके, देन हाउ टू इनपुट कैसे देना है वो तो समझ गया, यहां से हम लोगों ने इनपुट दे दिया। ठीक है, अब इधर से आउटपुट कैसे ले, राइट? फॉर दैट सिंपल लाइन यू हैव टू डू, you just have to do return. That's it. Okay, so if you do return, it will not return anything. Okay, so return simply says बाहर आ जाओ, फंक्शन के बाहर आ जाओ, that is it. Okay, so return says फंक्शन के बाहर आ जाओ, but if you say return y, okay, so when you say return y, it means फंक्शन के बाहर आ जाओ और y दे दो, जिसको भी जिसने भी कॉल किया उसको y वापस दे दो, राइट? सो यहाँ पे देखो किसने कॉल किया है, मार्क्स, ये वाले लाइन ने कॉल किया है, राइट? तो ये क्या रिटर्न करेगा, y रिटर्न करेगा। तो जब भी कुछ चीज रिटर्न होता है you will have to store it somewhere. Okay, so let's say a is equal to marks. Okay, so when I do this, ये जो फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो a में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। ओके, सो आपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के पास गया, उसने कुछ तो कैलकुलेशन किया और रिटर्न किया y, और वो y यहाँ पे आया, y a के अंदर स्टोर हो गया, राइट? नाउ द ब्यूटी इज नाउ यू कैन डू एनीथिंग विद दिस, राइट? सो यू कैन format in any way you want. Let's say let me copy this. Okay, so percentage of Shibu is equal to a. Okay, so if I run this now,
you can see I get percentage of Shibu is equal to 68.0. Okay, now the best part is जरूरी नहीं है कि मेरे को ऐसे ही करना है, मैं क्योंकि मेरे पास A है, now I can do it in any fashion I want. Okay, so I can also say Shibu got A%. Okay, so if I run this, I get both the things, but they are now both independent. Okay, so function में देखो कुछ भी नहीं है, फंक्शन में कोई भी प्रिंट कमांड नहीं है, आप अभी आपके हिसाब से जैसा आपको आउटपुट चाहिए वैसा आप आउटपुट ला सकते हो, राइट, बिकॉज यू हैव द वैल्यू डायरेक्टली, you are not putting the print command inside the function. So this is very very important. Okay, so how to return a data from the function. Okay, so basic idea is you give some input to the function and you get back some data from the function. Okay, so you have to give parameters to give input and you have to return something to give the output. Okay, in place of Shibu, can we write name? No, we cannot write name because name is a variable inside this function. Okay, so that is what we are going to see next. The next topic is the scope of the variables. Okay, so ये जो name variable है वो इधर है ही नहीं, that is the main part. Okay, so ये जो variable है यहाँ पे मैं name नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? Because ये name कहीं है ही नहीं variable यहाँ पे. वो variable कहाँ का है? Function का है. So function का variable आप बाहर नहीं ले सकते. That is the very important thing that you should understand. So next, in fact next topic वही था मेरा, ठीक है, scope of the variables. So पहले ये खत्म हो जाए उसके बाद scope पे देखते हैं, ठीक है. So that is not possible. Then what can I do? You can do is define name over here. Okay, so I can define a name over here. Now you may say sir दोनों जगह same name रहेगा तो चलेगा? चलेगा, ठीक है. चलेगा क्यों? बिकॉज ये जो नेम है वो इस फंक्शन का नेम है और ये जो नेम है ये पूरे प्रोग्राम का नेम है. ओके, सो दे बोथ आर डिफरेंट. ओके, सो लेट्स सी दैट आल्सो. तो So, हाँ बोलो. so in while calling the function, if we don't write the name that marks is equal to Shibu, then it will print the same line, no? Same output. समझा नहीं किधर. So we are calling the marks is a is equal to marks and या then या name. So we हाँ are not using that name, no? हाँ हाँ, एक्चुअली हम लोग यूज नहीं कर रहे, तो हम लोग एक्चुअली निकाल भी सकते हैं ये, ठीक है. तो हम लोग को ये एक्चुअली देने की जरूरत ही नहीं है. You are saying how can I statically type over here this, right? So basically this is going to come from some input statement. Okay, so input command से आने वाला है ये, right? So ये name आप फिर से declare कर सकते हो, यहाँ पे आ जाओ और ये print के बाद next function call के पहले आप फिर से नया नाम add कर दो यहाँ पे, ठीक है. That is fine. So you can initialize this name any number of times you want. Okay, सो ऐसा नहीं है कि एक बार सेट किया तो आप चेंज नहीं कर सकते. तो ये हर बार जब भी आपको कॉल करना रहेगा तो आप चेंज कर सकते हो, ताकि ये जो कमांड है अभी मैं इसको फिर से यहाँ पे ले लूँ और इसको भी ए डाल देता हूँ मैं. ओके, सो यू कैन सी आई एम रनिंग द सेम. So these two are different. Okay, so this is one set and this is the second set. Okay, in both the cases I'm changing the name and a and printing it again. Okay, so this is allowed. Okay, so now let me remove everything and let's look at the last part inside functions, that is scope of the scope of variables. Okay, so that is very important. So let's say uh, x is equal to 10. Okay, so I have defined a variable called x is equal to 10 and now I am
printing, I'm defining a function, let's say dummy. ओके, क्या लगता है आप लोग को क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट? If I run this right now, what will be the output? Let me see how many smart peoples are here. Very important thing to note is whenever there is a function, you will not get any output unless you call the function. Okay, so this is very important. That's why I'm stretching on these things again and again. Okay, so let's now call the function dummy. Okay, so now what will be the output? X is defined outside of the function. So if I try to access X, it should give me an error, right? But it will not. Okay, so let me run this and show it to you. You see, I get 10. Okay, so now you have to understand two things. There are two scopes of variable. One is the global scope and another is a local scope. Okay, so what is the global scope and what is the local scope? Okay, so if the variable is defined outside, then that is called as the global scope. Okay, so that is outside the function. It is not inside the function. But if you define the function, if you define the variable inside a function, then that will be a local scope. Okay, so any variable that is inside a function, I cannot access it anywhere outside the function. That is very important to understand. Okay, so let's say a is equal to 5. Okay, so I've defined a is equal to 5. I cannot print a. Okay, so if I try to print a, it will say a is not defined, right? So a is not defined. Why? Because a तो भाई डमी के अंदर था, right? वो बाहर ग्लोबल में है ही नहीं. That means I cannot access any variable defined inside any function. Okay, but any variable which is inside or in the global, I can access inside the function. Okay, so you can see this is the example. If I try to print x, because x is global, I can access it. That is the best part. Okay, so if I run this, I get 10. Okay, तो यहां तक सब कुछ ठीक है, राइट? नाउ एक बड़ा सा मैजिक होने वाला है. देखो, इफ आई डू x इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो मैंने क्या किया, आई डू x इज इक्वल टू 20, राइट? फिर मैंने प्रिंट x किया, डमी कॉल किया, फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट x किया. ओके, ये बहुत ट्रिकी है. ये आपको समझा तो आपको फंक्शन समझ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स सी क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा. सो इनिशियली x इज इक्वल टू 10, x का वैल्यूज 10 है जो कि ग्लोबल है. ओके, देन okay, so Krupal says it is going to be 20 and 10. First it will print 20 and then it will print 10. Who is this? Gaurav says first it will print 10, then it will print 20. Ajay says सिर्फ 10 कि दोनों 10. Mitali says 20 and 10. Ajay says 20 and 10. Okay. Okay, so majority of you say 20 and 10. Very good. You are correct. Okay. Now, okay. So majority of you are correct. It is 20 and 10. Okay. So
now the best part is that if you assign, okay, so if you use equal to sign inside a function, okay, always remember this is very important. Inside a function, if you use equal to sign, then this x now becomes a local variable. Okay, it's not a global variable. Okay, this is very important to understand, right? ये थोड़ा सा confusing है. क्यों? क्योंकि ऐसा हर जगह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है, राइट? सो यहाँ पे नॉर्मली इफ दिस लाइन इज नॉट देयर, if this line is not there, then this x is global directly. ग्लोबल का जो भी वैल्यू है वो ले लेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स. बट अगर आपने पूरे फंक्शन में कहीं भी इक्वल टू साइन यूज किया, मतलब x इक्वल टू किया, तो ये जो x है नाउ बिकम्स लोकल वेरिएबल. ओके, इट इज यू आर नॉट चेंजिंग द actual variable. Okay, so you cannot change the actual variable inside dummy directly. Okay, so there is, you cannot do that. So यहाँ पे आप जब ये x इक्वल टू 20 करते हो तो इमीडिएटली पाइथन क्या करता है, x का एक लोकल वेरिएबल बना देता है. ठीक है, ये x को हाथ नहीं लगाता, x का एक नया लोकल वेरिएबल बनाता है and you are changing that x. So this becomes now, so when you try to print x, you are actually printing a local value of x, that is 20. Okay, तो ये हो गया अपना dummy command complete, right? Next I try to print x, but ये x कहाँ पे है? ये वाला x नहीं है, ये global x print करने का ट्राई कर रहा है, बिकॉज ये कमांड आउटसाइड ऑफ फंक्शन है, राइट? तो ये जो x है वो इसका वैल्यू निकालेगा, दैट इज 10, राइट? सो पहले डमी की वजह से 20 प्रिंट होगा और उसके बाद प्रिंट 10 प्रिंट होगा, राइट? सो इफ आई रन दिस, I get 20, I get 10. Okay, perfect. So this is very important to understand. So normally फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल एक्सेसिबल है, बट अगर आपने इक्वल टू साइन यूज किया तो वो जो वेरिएबल रहेगा अंदर का, मतलब जो भी अगर सेम नाम अगर आपने यूज किया तो ये लोकल वेरिएबल बन जाएगा, अगर आपने इक्वल टू यूज किया तो. ठीक है, जब तक आप इक्वल टू नहीं करते तब तक x अगर सेम नाम यूज किया है तो वो ग्लोबल ही रहेगा. ठीक है, ओके, I hope till here everything is clear. Now the last part is, can I change the data of the global variable from a function? मतलब मुझे यहां से चेंज करना है, फंक्शन के अंदर से मुझे ग्लोबल वेरिएबल का डेटा चेंज करना है. इज इट पॉसिबल? बिकॉज इफ आई ट्राई टू चेंज आई विल हैव टू यूज इक्वल टू, और अगर मैंने इक्वल टू यूज किया तो पाइथन क्या करता है, x को लोकल कर देता है. दैट मीन्स ये जो बाहर वाला x है वो कभी चेंज ही नहीं हो सकता अंदर से, राइट? मतलब मैं डमी फंक्शन से कभी भी ग्लोबल x को चेंज नहीं कर पाऊंगा, राइट? सो देन व्हाट टू डू, हाउ टू चेंज इट? सो इट इज वेरी सिंपल. सो डिफॉल्ट बिहेवियर जो है पाइथन का वो आपको चेंज करना पड़ेगा. कैसे करोगे? यू जस्ट हैव टू से दैट यू आर नॉट wanting to use the local variable, you want to use the global variable. Okay, so for that there is a keyword called global and x. Okay, so when you do this before assigning, okay, मतलब आप x इक्वल टू 20 करने से पहले अगर आप ग्लोबल x कर देते हो तो आप फंक्शन को बता रहे हो कि मैं नया वेरिएबल नहीं बनाना है, मुझे जो एक्चुअल x है उसको ही यूज करना है. ठीक है, so now if I print, what will be the output? If I run, you see I get 20, I get 20. Okay, so मतलब यहाँ पे भी 20 हो रहा है और because x चेंज हो गया इसके लिए यहाँ पे भी आप प्रिंट करोगे तो 20 ही आएगा, right? So that's why you're getting 20 20. Okay, if you use this keyword before doing equal to, then the global variable is changed. अगर आपने ये नहीं डाला
ठीक है, ये लाइन मैंने कमेंट कर दिया, मतलब ग्लोबल नहीं किया, तो whenever you use equal to, it will create a local copy of x, it will not change the global copy. Okay, so if I run this, you can see I get 20 and 10, right? तो मतलब ये पहला वाला चेंज हो गया, बट ये चेंज नहीं हुआ बिकॉज ये तो ग्लोबल है. बट अगर मुझे ग्लोबल को चेंज करना है, देन आई विल simply do this global x. Now this x and this x are same. Okay, तो आप एक्चुअली जब x इक्वल टू 20 करते हो तो आप लोकल x को नहीं, ग्लोबल x को चेंज कर रहे हो. ठीक है, मतलब आर यू सेइंग इज इट पॉसिबल टू डू द रिवर्स? नो, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल. I cannot change the local variable. Let's say I have, uh, let's say a equal to 50. Okay, so if I have a equal to 50 inside a function, then I cannot come over here and say a equal to 30. Okay, that is not possible. Can we change global variable outside the function? Yeah, obviously. ग्लोबल अभी तक हम लोग फर्स्ट लेक्चर से जो अभी तक किए हैं वो सब में वेरिएबल ग्लोबल ही था, राइट? तो हम लोग अगर x है तो x इक्वल टू 50 कर सकते, राइट? बिकॉज x यहाँ पे डिफाइंड है, x यहाँ पे डिफाइंड है, राइट? यू कैन चेंज इट एंड देन यू कैन प्रिंट x. ओके, सो दैट विल वर्क. यू कैन सी नया वैल्यू प्रिंट हुआ. ग्लोबल को तो ऑब्वियसली हम लोग चेंज कर ही सकते हैं, बट फंक्शन के अंदर से चेंज नहीं कर सकते. अगर फंक्शन के अंदर से चेंज करना है तो ग्लोबल कीवर्ड जरूरी है. ओके, सो लेट्स से okay, so let's take a variable a equal to 5 and let's define test function. Okay, so I am giving the name test and x okay. So this function does a very simple thing. जो भी x है उसका रेस टू 2 करेगा. ओके, सिंपल. सो नाउ इफ आई वांट टू रन दिस, आई विल से टेस्ट ऑफ लेट्स से 5. ओके, सो टेस्ट ऑफ 5 करूंगा तो 5 कहाँ पे जाएगा? x पे स्टोर होगा एंड x रेस टू 2 मतलब 25. नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई है, रेस टू नहीं है, मल्टीप्लाई है. सो 5 इंटू 2 10, राइट? सो 10 आउटपुट आना चाहिए, राइट? सो लेट्स प्रिंट इट आउट एंड सी डू वी गेट द आउटपुट 10. इफ आई रन दिस आई गेट 10. परफेक्ट. ओके, सो यहाँ तक सब ठीक है. ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ गिविंग 5 डायरेक्टली, if I give a, it should give me the same output, right? Because a is equal to 5 है, बराबर? तो a यहाँ पे जाता है और सब कुछ चेंज होता है. ठीक है. Okay, so now let's print I get 10, right? Okay, now what I'm going to do is I'm going to print a. Okay, so after running this all these things, I'm going to print a. Okay, so इसका रिजल्ट 10 आया, मतलब 5 इंटू 2 10, और a अभी भी ओरिजिनल वैल्यू a का क्या है वो मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ. ओके, सो a, राइट? आई एम गोइंग टू टेक दिस एंड पुट इट ओवर हियर. ओके, आप बोलोगे क्या कर रहे सर, थोड़ा सा रुको, बताता हूँ मैं. ठीक है, सो प्रिंट a किया, मतलब बिफोर एग्जीक्यूटिंग टेस्ट a का वैल्यू क्या है
after executing test a का value क्या है, that is what I want to see. Okay, so if I run this, you can see before executing test the result is 5. उसके बाद जो भी output आया वो मैंने print किया, और after executing test it's also 5. Okay, यहाँ तक सब ठीक है. But अगर मैंने यहाँ पे x equal to 10 कर दिया, ओके मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर x इक्वल टू 10 कर दिया, तो आपके हिसाब से क्या आउटपुट आएगा? 525. Okay, so let's see if you are correct. Okay, so let's run this. Perfect, we got 525, right? So you can see that जो भी मैंने पास किया हो, right? So I am transferring that value over here, but it is not going to matter much because x को आपने change कर दिया, right? So आपने x को change कर दिया 10 से, right? So 10 into 2 20. So इसका output 20 आएगा, but इसका 5 और इसका अभी भी 5 है because अभी तक change हुआ नहीं है, right? So this was all about the scope of the variables. So this finishes with functions, at least major part of the function. So you can start with, everybody can start with task number 16. So task number 16 is very easy. You have to write a program to calculate the value of this b square minus 4ac. So you all know what this is, right? So to find the roots, the square root term that we find out is b square minus 4ac. Okay, so you don't have to worry about the entire expression. We just have to find out the value of this. Okay, a small part of it. Okay, so b square minus 4ac, this is what we want to find out. Okay, so you have to create a function which will calculate this. Okay, so basically the input to the function will be a, b and c, and in return you should get the result. Okay, so result can be returned from the function, and then you have to print it in this particular format. Okay, so you can see, let me just zoom in and show it to you. So the input will be space separated 3 values. Okay, so 4, 5 and 3. Okay, so like this. So your first job will be to separate it out. Okay, so first of all you have to take the input, so input command, then you will have to split it into 3 parts, so 4, 5 and 3. Then these are going to be strings, so you have to convert it into int. Okay, so that you have to do, okay, either with using map function or directly by doing int directly on 3 of them, because you know how many parameters are going to be there, so you can directly also do it. Okay, and then you have to define a function called, you can call it anything you want. Okay, and the input to the function will be these 3 values, so 4, 5, 3. You should be stored in a variable, and that should be sent to the function, and the output should be only this value minus 23. Okay, and as a when you print, you can print it like this. So result of b, that is 5 square minus 4, a is 4 and c is 3, so 4 into 3 is equal to minus 23. So this is how you have to print the result, exactly like this. Okay, now it is possible that some of you will do the printing inside the function, that is fine. Some of you will return it and then print it outside the function, that is also fine. Both are absolutely correct. Okay, whichever you follow, you will get all the cases passed. Only thing is, I personally prefer that printing should not be inside a function. Okay, printing is not the job of a function.
function should only do the mathematical operation, then return it and let the program, main program, do the printing part. Okay, so that is what I think. Now it is your personal preference. You can do whatever you want. Okay, so this is the first program in functions that I would like you to do. Only requirement here is there has to be a function. Okay, so that is important. Now just to help you out, I have already provided you this part of the code. Okay, so this part of the code, what it does. Okay, so let me just quickly explain this so that you know, if you want you can use this code, or if you, okay, so what this code does is, we have already seen this code before, but let me just quickly revise. So first of all, I'm taking an input, take it from the inside out. Okay, so first I'm taking input, then I'm splitting it. Okay, because my input is in this format, if you remember, 4 5 6. Okay, so I'm in giving input like this, right? So 4, then space, then 5, then space, then 6, right? So first I will take the input to read this, then I'm splitting it, right? Then because it's a string, I have to convert it into integer, right? So for that I'm using the map function and the int function. Okay, so map will run through all the elements one by one and apply int on it. Okay, and once I get all this thing, then I want to convert it into a list. That's why I'm using this list function. Okay, you can either do list or a tuple, it doesn't matter. Once you do that, then I am using my technique of unpacking. If you remember, I have taught you unpacking. So the first element goes to first variable, the second element goes to second variable, and the third element goes to third variable. Okay, in this list. Okay, so that is how unpacking does. Okay, so this code I have already given it to you. So when you open, you will see this part. All you have to do is write the function and print the output. That's it. Okay, so all of you can try it out. So let's define the function first, because we cannot use the function first. We have to first define it and then we can use it. Okay, so let's define. So def, then name of the function. Name can be anything. Let's call it formula. Okay, so formula. Okay, anything, any name will do. So the input to the formula is three things: A, B, and C. Okay, now very important thing to note over here is this ABC and this ABC are different. Okay, so this is local variable ABC and this is global variable ABC. Okay, so if you want, you can name it as X, Y, and Z. Okay, it doesn't matter what name you give, it doesn't matter. Okay, so usually what people do is, just to differentiate between local and global, they will give different names for the local variable and different names for the global variable. Okay, so that is what this is. Okay, but I prefer to use the same names. It is just my preference. Okay, it is completely from developer to developer. Okay, so I use the same names. Okay, so now I have ABC. So now if I want to write the formula, I will simply write what is the formula? B square minus 4AC. So I will say, let's say Y is equal to B into B, that will be B square, right? Minus 4 into A into C. Okay, so that will be my B square minus 4AC. Now I have to do return Y. Okay, so this is my definition of the function. Okay, now I have to call it. Now to call it, I will come down and say formula
A comma B comma C. Okay, now this ABC is the global variable ABC. Okay, so that is these values. I'm passing it to the function. Okay, so once that is done, it is going to return something. So whenever a function returns something, you will have to store it somewhere. Okay, so let's call it answer is equal to formula. Okay, so इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आंसर में स्टोर हो गया. नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज प्रिंट. सो द प्रिंट कमांड, और प्रिंट अपने को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिजल्ट चाहिए. कौन से फॉर्मेट में चाहिए? ये फॉर्मेट में चाहिए, राइट. सो लेट्स कॉपी दैट फॉर्मेट, पेस्ट इट, और जहां जहां रिप्लेस करना है वहां पे रिप्लेस करो. सो दिस विल बी B, right? So I will replace this by B. This is 4 and this is A and this is C. Okay, so B square minus 4AC is equal to, ये रहेगा answer, ANS. Okay, now right now this is just a string. To make it formatted string, I will just put F, and I think that is it. So now I will right click and run. So let's say 5 4 3. So 5 is A, 4 is B, and 3 is C. So if I run it, I get my result. Okay, so this is a simple way of doing this. Okay, now what are the variations, what people must have thought of? Okay, so मतलब आप लोगों ने क्या क्या variations किए रहेंगे इसमें, वो भी देख लेते. ठीक है, फर्स्ट वेरिएशन, ये y unnecessarily y लेने की जरूरत नहीं थी. So I will just remove this and I will directly return y or return this expression. Okay, so इससे मेरा कोड थोड़ा सा छोटा हो गया, right? So I will directly return whatever is the result. Okay, so that is one thing. Second thing is, कुछ लोग रिटर्न नहीं कर, मतलब ऐसे ही रखेंगे, बट ये प्रिंट कमांड को ही अंदर ले लेंगे. ठीक है, सो ये प्रिंट कमांड को ही अंदर ले लोगे आप. ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आंसर यू विल बी पुटिंग y. दिस विल आल्सो डू, ये भी चलेगा. Okay, so you're getting the same thing, but this is not ideal. Okay, so I've told you why this is not ideal. For function के अंदर आप print command ज़्यादातर मत डालो. ठीक है, so it's better you do return, get the output, store it somewhere, and then use it to print. Okay, so that is what I would suggest. और कुछ और भयंकर लोग हैं जो इससे भी बड़ा अप्रोच करेंगे. लेट मी शो यू. सो इससे बड़ा वाला अप्रोच मैं दिखाता हूं. दे विल नॉट पास ओनली एनीथिंग. ओके, सो दे विल नॉट पास एनीथिंग. व्हाट डू यू थिंक, विल दिस वर्क? ओके, सो क्या लग रहा है, ये चलेगा? ये प्रोग्राम आउटपुट देगा आपको? सो इफ आई रन दिस and if I put some input, it's still, you can see right now I'm getting none over here. Okay, but मेरा प्रोग्राम चलेगा अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न डाला तो. Okay, so let's put return y. Okay, and run it again. You can see it still works without even passing any parameters. It is still working. Now how is it working? Okay, the reason why it is working is because function के अंदर आपने b और a यूज किया है, b, a और c यूज किया है, बट वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है फंक्शन के अंदर, राइट? सो इफ इट इज नॉट डिफाइंड, then it will use directly the global variable. Okay, so that is how Python works, right? और यहाँ पे b, a और c ये तीनों ग्लोबल वेरिएबल्स है, बट y जो है वो लोकल वेरिएबल है. ओके, सो y आई कैन नॉट एक्सेस इट ओवर हियर, राइट? सो फंक्शन के अंदर ही y अवेलेबल है, बिकॉज यू कैन सी इक्वल टू साइन आ गया. इक्वल टू आ गया मतलब y इज अ
local variable, right? Task number 17. Okay. Now we don't have much time to cover more programs, but I will be putting up uh, sample programs that you can practice. Okay. So you can try that. But for our experiment purpose, we will be having only two programs for functions. Okay. Okay. So let's see what we have to do in this. So this program is a little bigger program, and in fact it's the biggest program till what we have typed till now, I think. Okay. And this is a slightly it is very easy, but at the same time it is little, more you have to type. Okay. So it is to make a calculator. Now, as you know, whenever we learn any programming language, at some point we will try to make a calculator, right? So here also we are going to make a calculator, but in a slightly different manner. Okay. So that we can use the wonderful features of Python. So normally in C programming, when we, or C or in Java, when we make a calculator, we will run it in a for loop, right? And we will ask them which operation do you want to perform, addition, subtraction, multiplication, division, plus minus, जो भी डालना है वो डालते थे. And then what is operand 1, then what is operand 2, then we get print the result. Okay, so basically the process ऐसा था, type the operation, plus minus, multiply, divide, कोई भी एक, operand 1, operand 2, result. Okay, so 4 step में आपका output आता. But in Python, what I'm thinking of doing is slightly different. So here I'm going to give a command like this. Okay, so basically it will be a one line command. So add 4, 5, 6. Okay, so the number of elements can be anything. So I'm saying add 4, 5, 6, maybe add 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा कुछ भी डाल सकता हूँ. Okay, so the first part is the operation that you have to perform. Okay, so it can be addition, it can be division, div for division, sub for subtraction, and mul for multiplication. Okay, so ये चारों में से कोई एक होना चाहिए. Okay, अगर इसके अलावा कुछ और आया तो invalid operation लिख के आना चाहिए. Okay, so let's see how this will work. So you do add 4, 5, 6, right? So basically आपका input ऐसा रहेगा. So let's say add 5, 5, 5. तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? 15, क्योंकि एडिशन ऑफ 5, 5, 5 is 15. Okay, now how to do this program? Okay, so there are two steps involved in this. First step is to separate the input. Okay, so first we have to separate the input. So separate the input के लिए first तो ये है ऑपरेशन को अलग करना है, और बाकी जितने भी डेटा है उसको एक वेरिएबल में डालना है. एंड इफ यू नो, आई हैव taught you before how to get everything inside one, right? So I have already given you some code. Okay, so this is the code that I have given you in this program. Okay, so अभी से जितने भी programs रहेंगे ना उसमें मैं थोड़ा सा कोड मैं आपको पहले से दे के रखूंगा, right? So that you don't have to write everything from scratch. Okay, so ये जो कोड मैंने दिया है, let me show you. So this is the code that I've given you, right? So what this code is, first of all I'm taking the input because यहाँ पे input लेना है, right? Read करना है command line से, तो मैंने input लिया, उसको split कर दिया, right? Split करूंगा तो मुझे ये चारों अलग अलग मिलेंगे. Add अलग मिलेगा, 5 अलग मिलेगा, 5 अलग मिलेगा और 5 अलग मिलेगा, right? उसमें से मुझे add को अलग करना है और बाकी जितने भी है उसको अलग करना है. ठीक है, मतलब 2 सेट बनाना है. तो मैंने क्या किया, अनपैकिंग किया, जिसके अंदर OPR करके एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर जो भी ऑपरेशन है वो स्टोर होगा, एंड x स्टार किया, मतलब स्टार x किया. स्टार x से क्या होता है, remaining everything will go inside x as a tuple. Okay, so that is what will happen over here.
ओके, सो यहाँ पे अगर आपने 15 एलिमेंट्स भी डाले, सारे 15 x में चले जाएंगे, ठीक है. So once I have this, I have OPR and I have x. Now x has to be converted to int. Okay, so for that what I've done, मैंने map किया, int किया और x किया, right? So x के हर एक एलिमेंट्स पे एलिमेंट को int में रन करेगा map function, okay? And then I'm going to convert it into a list, okay? So now you have two things that I've given you. First one is operation. So operation will be either addition, subtraction, multiplication or division, okay? So that is ADD, DIV, SUB and MUL. इन चारों में से कोई एक रहेगा, right? And X में आपके सारे डेटा है. Now you have to find the, you just have to print the output, okay? So addition किया तो addition का output आना चाहिए, subtraction किया तो subtraction, multiplication किया तो multiplication, okay? Now one more thing, it is given is MUL, that is multiplication, and ADD, addition, can have any number of parameters, okay? But subtraction and division में दो ही पैरामीटर रहेंगे, राइट? सब्ट्रैक्शन में दो ही एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब यहाँ पे कैसे तीन तीन आ रहे हैं ना, तीन आ रहे हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, बट वो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन में, नॉट फॉर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन. डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन में दो दो एलिमेंट्स ही रहेंगे फिक्स, ओके? सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट अ फंक्शन फॉर ईच ऑपरेशन, ओके? सो एडिशन है तो एडिशन का एक ऑपरेशन के लिए फंक्शन लिखना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फंक्शन लिखना है, और डिवीजन के लिए फंक्शन लिखना है, और एक क्या बचा, सब्ट्रैक्शन के लिए एक फंक्शन लिखना है, ओके? एंड देन यू हैव टू यूज एन इफ लूप, सॉरी इफ कंडीशन, to check what is the operation and run respective function, okay? So this is the entire program. Let's try, I will now explain the program, okay? So that if anybody is stuck they can continue from there. So let me take what I've given you. So I have given you this much, okay? So इतना मैंने आपको दिया है. अब I have to write the code, okay? So let's start writing the code first. I will define the functions later. First let us write the code. So code तो बहुत ही simple है. I will use, I have to do different operation based on what is the OPR value, right? So if I do if OPR is equal to add है, तो अगर OPR is equal to add है, then what I'm going to do, I'm simply going to do, let's say ANS is equal to क्या रहेगा, let's call the function name as add, okay? So ये function बनाया नहीं है, वो बनाना है अपने को. So add में I am going to give x as the input, okay? So ये x जो यहाँ पे है वो मैं directly as a input दे देगा, right? Okay, so now I have this answer. Now next, that is first one, okay? So next, else if OPR is equal to MUL multiplication, then answer is equal to, ये भी फंक्शन बनाना बाकी है मुझे, तो ये भी मैं बनाऊंगा MUL, ठीक है? नेक्स्ट, else if OPR is equal to क्या बचा, ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सब्ट्रैक्शन SUB, so answer is equal to SUB of x, okay? सब कुछ प्रोग्राम एकदम ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? लेट मी कॉपी दिस अगेन, ओके? एंड लास्ट वन क्या है, डिवीजन, DIV, और ये फंक्शन का नाम रहेगा DIV, ओके? ओके, सो आई हैव नाउ 4 फंक्शंस. अब एक लास्ट कंडीशन भी देना है मुझे, एल्स, मतलब अगर ये चारों नहीं है तो क्या होगा. सो प्रिंट, and I will say invalid
operation, right? Okay, so now my program is ready. Now obviously I'm just storing it in answer, so I have to come down and I can say print answer. Okay, so I will say print answer. Okay, okay, so now this is our program. Now the only thing left is to define these functions, right? So one by one we are going to write the functions. So let's come over here. So I cannot define it below the if, okay, because whenever you define, whenever you use a function, the definition should be already present. Okay, so I have to go up and I can put it over here. Okay, so let's do def add x. Okay, so this is the first thing that I'm going to do, and addition is very simple. I just have to return sum of x, that's it. Okay, क्योंकि sum function तो पहले से अपने पास python में है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, right? Next function is multiplication. Now multiplication mul करके कोई फंक्शन नहीं है, right? तो मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं कर सकते. So what we have to do, so अगर दो ही वैल्यूज होते तो x of 0 इंटू x of 1 करके मल्टीप्लाई कर लेते, राइट? बट यहाँ पे if you look at the description, it says mul and add can have any number of parameters. That means एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते. So let's do multiplication using for loop. Okay, so let's do product is equal to 1. ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू 1 करते हैं प्रोडक्ट का. देन आई एम गोइंग टू डू फॉर, लेट्स से क्या नाम ले, आई इन एक्स. ओके, तो ये मैंने क्या किया, एक्स इज अ लिस्ट, राइट? सो इसके हर एक एलिमेंट को मैं एक एक करके यूज करूंगा. मतलब आई पहले लूंगा, फिर मतलब फर्स्ट एलिमेंट पहले लूंगा, वो आई में स्टोर होगा, फिर सेकेंड एलिमेंट आई में स्टोर होगा, फिर थर्ड एलिमेंट, ऐसा, राइट? सो वंस दैट इज डन, now I can do simple prod, that is product is equal to prod into I. Okay, so basically क्या हो रहा है, in every iteration I am multiplying I with prod and saving inside prod. Okay, so ये पूरा होने के बाद now I can simply return prod, so that will be my answer. तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन, राइट? नेक्स्ट और दो फंक्शन बचे अभी, बाकी दो फंक्शन बहुत इजी है. डेफ सब्ट्रैक्ट ऑफ एक्स. नाउ बिकॉज सब्ट्रैक्ट और डिवीजन में दो दो एलिमेंट्स ही है, तो एकदम ही सिंपल है, रिटर्न एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स ऑफ 1. ठीक है, ये हो गया पहला. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं डिवीजन कर देता हूँ और ये हो जाएगा डिवीजन. दैट्स इट. ओके, सो दिस इज माय एंटायर program, very simple. Okay, now PyCharm is giving me an error. It's not an error, it's a warning. It says name answer can be undefined. Okay, so I will show you what that means. Okay, let's first run this and see. Okay, so run kiya. So let's say add 543 2. Okay, so ये मेरे को add करना है. Press enter. I got 20. Okay, so if you check, this is 5, this is 5, that is 10, and this is 10, that is 20. Okay, perfect. Now if I run it again, let's say multiply mul 555. Okay, so 5 into 5 into 5 should give me
125. Perfect. Okay. अब समझो मैंने कुछ ऐसा भलता ऑपरेशन डाल दिया, ठीक है, which is neither addition, subtraction, division or multiplication. If I press enter, you see what happens. Okay, so it says invalid operation. वो तो बराबर है because हमने else में invalid operation डाला है. But look at the error. Okay, so the error is answer is not defined. Why? Because answer कब define होता है? जब ये कोई भी else statement, सॉरी ये जो if statements है इतने, इसके अंदर ही आंसर है, राइट? अगर else में आया तो आंसर वेरिएबल ही नहीं है, राइट? So to solve this, I have there is a better option. What you can do is you can, instead of printing invalid, you can say answer is equal to invalid. Okay, so इसमें क्या होगा, ये जब प्रिंट करेंगे तो इनवैलिड ऑपरेशन करके प्रिंट होगा, ठीक है? सो लेट मी शो यू. You can see invalid operation. Okay, so this is how you can create a simple calculator in Python. Okay, so let's say I have an array, a list. Okay, so what I want to do is I want to square this. Okay, so I want to square all the elements inside this and create a new list B. Okay, so मुझे output में क्या चाहिए? B चाहिए. So print, let's say B. Okay, and the B is actually square of all these elements. मतलब क्या क्या आना चाहिए? 9, 16, 25, 36 and 9. Okay, so ये values आने चाहिए मेरे को, right? So how to do it? So I will show you many methods. Okay, so the first and the easiest method would be using for, जो सबको समझेगा, for I in A, right? तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? A के एक एक एलिमेंट्स को I में स्टोर कर रहा हूँ, right? So now what I'm going to do is I'm going to define B, which is going to be empty. Okay, empty list. B is empty. Now I'm going to do B dot append I into I. Okay, so basically क्या कर रहा हूं मैं? I into I will give me square of it, right? So square करके मैं B के अंदर store करते जा रहा हूं, right? So that will be a simple program. If I run this, you can see I get the squares, right? So this is option number 1. Let's look at option number 2. Okay, so option number 2 is using, let's say, what option should I do? Okay, so let's take using map function. Okay, so next is using map function. Okay, so we all know this, right? So I can do map, and here inside map I need to define a function which is going to do the operation, right? So that I will define, but I want to do it. The second is so here it is going to be function. Okay, so some function is going to be there, right? And here is the list on which you want to apply that function, right? So normally हम लोग ने यहाँ पे input dot split करते थे, right? तो उसकी जगह में मैंने अभी एक वेरिएबल ले लिया है जो एक लिस्ट है, राइट? अभी मुझे यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना है, राइट? सो यू कैन डिफाइन अ फंक्शन, right? So let's define a function over here. Let's say def,
एंड नॉर्मली हम लोग यहाँ पे int डालते हैं, राइट, बट int तो इंटरनल फंक्शन है. You can also put any user defined function, right? So let us see. So let's say क्या फंक्शन का नाम दे, let's say test. Okay, कुछ भी नाम दे सकते हो आप. मैंने टेस्ट नाम दिया है and it should accept one value. So let's say x. Okay, and it should return x into x. Okay, so ये सिंपल एक फंक्शन बनाया मैंने टेस्ट करके, ठीक है. और वो टेस्ट फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेता है x, आउटपुट देता है x into x, ठीक है. So now what I'm going to do is I'm just going to put the name of the function, only the name, nothing else. Okay, so name of the function here. Okay, and now ये मैप फंक्शन वर्क करेगा, राइट. बट ये मैप फंक्शन मैप आउटपुट देगा, तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू लिस्ट. And once I convert into list, now I can save it inside B. Okay, so ये हो गया मेरा काम done. Okay, so now it is complete. Now if I run this, let's see what happens. I get the exact same result. Okay, so you can see how this thing is working, right? So A का एक एक एलिमेंट को लेता है मैप फंक्शन और टेस्ट को देता है, राइट. टेस्ट को देने के बाद टेस्ट क्या कर रहा है, टेस्ट उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न देता है, राइट. सो दिस फंक्शन इट कैन बी एनीथिंग. फॉर इन आवर केस स्क्वायर करना था, इसके लिए स्क्वायर किया मैंने, राइट. सो ये करने के बाद उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, मतलब मैप ऑब्जेक्ट को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया और बी में स्टोर कर दिया. एंड नाउ आई एम प्रिंटिंग बी. सिंपल. ओके, सो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ doing the same thing. Okay, now you can see in the function that you have defined, there is only one line of code, that is x into x. Okay, so you have an option, something called as lambda function. Okay, so this is very important feature of what do you say, Python, is anonymous function. Okay, so what do you mean by anonymous function? So a function which does not have a name is called as a anonymous function. Okay, so basically you can see here this function has a name test. Okay, so जब भी मुझे इसको कॉल करना है तो मैं वो नाम लेता हूँ, उससे वो कॉल होता है, right? But what if I tell you that there is a way you can define a function without a name? Okay, so then that will be called as anonymous function or lambda function. Okay, so to define that, you don't have to define it also directly. जहां भी आपको यूज करना है डायरेक्टली यूज करना है, डिफाइन भी करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो लेट मी शो यू हाउ टू डू इट. सो इधर मुझे लैम्डा फंक्शन चाहिए. सो द वे लैम्डा फंक्शन वर्क्स इज यू स्टार्ट विथ लैम्डा. ओके, सो इंस्टेड ऑफ DEF, नॉर्मली हम लोग फंक्शन DEF से लिखते हैं ना, लैम्डा फंक्शन लैम्डा से लिखते हैं. ओके, सो you write lambda, then you provide what all parameters will be the input. Okay, so the input will be, let's suppose, x, then you put colon, and then you write the operation that you want to perform on x. Okay, so it will be x into x. That's it. So this is called a lambda function. Okay, so if I run this now, you can see I get the exact same result. Okay, so ये चीज याद रखना, जब भी आपको वो फंक्शन, कोई भी फंक्शन का मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं आने वाला है. एंड सेकेंड, इट इज अ वन लाइन फंक्शन. ओके, दैट मीन्स मल्टीपल लाइन नहीं रहेंगे उसके अंदर, तो यू कैन यूज लैम्डा. ओके, so this is how you can use lambda. So I will give you the syntax again. So let me comment, and let's say the syntax is, so you start with lambda, then the parameters. So let's say any parameters. So r comma, so a. Okay, so the way lambda function is defined is you type lambda, then the number of parameters that you want to give, let's say a, b,
Okay, then you put colon. Okay, so this colon will be after this colon it will be the expression. So you can say a plus b. Okay, so any expression, but it should be one line expression. Okay, so ये हो गया मेरा lambda function, and now I can use this. Okay, so let me um, so let me show you one more example of lambda function. So if you remember the last task that we performed, the function sorry um, the task that we performed was what, to find b square minus 4ac, right? So let us see. Let's go back to it. So this, in this line of code I have already given you, right? So this is already given to you. So I'm getting a, b and c. So how did I tell you how to do this? So you will define a function, let's say formula, and it accepts three parameters a, b, c. Then you return b into b minus 4 into a into c. Okay, now look at this function. Can I convert this function into a lambda function? Yes, I can convert this into a lambda function. So let me show you how. So first of all, lambda function is an anonymous function. So this is not required. The name is not required. Okay. Second thing, I don't even need the parenthesis, right? Second thing, this def should be lambda, right? After that, as I told you, this should be a one line code, right? So I do not want to have return and anything else. Okay, so I'm simply going to put this. Okay, so this does it, but this is of no use, right? Because ये function uh, execute तो हो रहा है, but क्या फायदा इसका, right? So I have to store it somewhere. So let's store it, let's say uh, ओके, तो मैंने क्या किया, ये लैम्डा फंक्शन को ये वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फॉर्मूला वेरिएबल में स्टोर कर लिया, राइट? सो नाउ जस्ट लुक एट व्हाट हैपेंस. सो नाउ आई वांट टू print the result of this. Okay, so I want to print the find out the value of b square minus 4ac. So the way you call a lambda function, because the lambda function doesn't have a name, you cannot call it directly. But if you assign it to a variable, then you can call the variable instead of the lambda function. You can call the variable. Okay, so let me show you how. So you can call the variable, and on the variable you can give the values a, b, c. Okay, and you can get the result. Okay, so a and s is equal to formula, and now you can print it. Okay, so now if I run this, and let's say I give three values, if I press enter, I get minus 23. That is the answer of b square minus 4ac. Okay, so you can see a function and a lambda function, they both are almost the same. Only thing is, lambda functions have only one line of code. Okay, so this can be very helpful when you want to uh, do some operations. Okay, so for example, in case of map function here. Okay, so here you will normally put a function name. Okay, so normally हम लोग int डालते हैं, but उसकी जगह में कुछ और advance करना है तो directly नहीं कर सकते, आपको एक function define करना पड़ेगा, right? So instead of defining a function, you can directly use a lambda function over there. That will also solve the problem. Okay, so this is what is the use of lambda functions.
So wherever you have single line of code and you don't have multiple uses of a function, मतलब multiple times आपको call नहीं करना है, then you can use a lambda function. Okay.